कल हम देख रहे थे भजन संगीत 11 और 12 एंड उसका बैकग्राउंड एंड कॉन्टेक्स्ट मैंने बताया था. हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर भजन संगीत Psalms chapter number 11 and 12, the context? I told maybe during the time of Shaul or maybe during the time of Absalom, and it is not a fully personal psalm. Of course, it starts with a lament, but it ends with confidence, a word of confidence. But that was not something personal for David. So there was a crisis in the nation. There was a crisis in the nation. So they prayed to God, and they were asking how long this will be happening. And in number 12, those who are faithful, they were vanishing. They are going very less in number. So they were asking to God, "Kitna din hoga? How many days this suffering will last?" So coming to chapter number 13, heading itself, "How long, O God, O Lord?" Question mark. Heading में क्या लिखा? How long, O Lord? Psalm 13 is one of the most poignant and emotionally charged psalms in the Hebrew Psalter. What is meaning by poignant? All through these days I was explaining the meaning of this word. Poignant. Somebody is revealing or explaining all his feelings and emotions to the higher authority by thinking that the help will come. बड़ा एक अधिकारी से उनका जरूरत क्या है बता रहा है, उनका सारे इमोशन फीलिंग को बता रहा है, ये सोचकर हमें मदद या मुझे मदद मिलेगा. So Psalm number 13 also follows the same kind of a psalm which is very much poignant in character, which means the psalter is explaining all his feelings and emotion to God. All feelings and emotion means even in anger they speak to God. और अपना अपना गुस्सा में कभी कभी परमेश्वर से बातें करेगा. फॉर एग्जाम्पल हेडिंग, हाउ लॉन्ग ओ गॉड ओ लॉर्ड. मे बी वी कैन आस्क दिस क्वेश्चन आउट ऑफ आवर एंगर और एंगर प्लस सैडनेस इमोशन मिक्स होते भी पूछ सकता है. कभी हम मुसीबत में होगा समय हम पूछते हैं ये कितना दिन होगा यार करके पूछते हैं ना. हाउ मेनी डेज आई हैव टू गो थ्रू दिस. For example, the training. How many days more I have to go through this? Sometimes गुस्सा में पूछेगा. So the same way you have to consider and read verse 1 and 2. How long, O Lord, will you forget me forever? How long will you hide your face from me? There you can see the word me, personal pronoun, which means it starts as a personal prayer. And we will read the next after reading the introduction. It captures raw human experience of despair, abandonment, struggle to maintain faith in the midst of suffering. So the context of this psalm is they are going through suffering and they are thinking that everyone, even God left us. परमेश्वर भी हमें छोड़ दिया, हम अकेला हैं या मैं अकेला हूँ, परमेश्वर मुझे छोड़ दिया. एंड इस मुसीबत के बीच में विश्वास को बचा के रखना बहुत मुश्किल है. So it is written, they are very much they are struggling to maintain their faith in the midst of suffering. इस पीड़ा या सताव के बीच में विश्वास को पकड़ के रखना बहुत मुश्किल हो रहा है. So they are praying. So he is or she is praying. Traditionally attributed to King David, वहाँ लिखा है to the choir master a psalm of दाऊदी लेकर करके वहाँ लिखा है. It is a psalm of the psalm is a brief yet profound expression of lament that transition from anguish to trust and faith. So the tuning is it starts from anguish, anger or lament, but it ends with praise and trust. शुरू होता है विलाप में, अंत होता है, it will end by praising God and saying my trust is in God, so I will praise him. The psalm structure, language and theological depth make it a vital text for understanding the dynamic of biblical lament
and the relationship between human suffering and divine faithfulness. ये भजन संगीत हमको परमेश्वर का विश्वास योग्यता हमारा सफरिंग का बीच में कैसा होगा समझाता है. So this Psalms teach us that the faithfulness of God, how it is and how we can experience it even in the midst of suffering. That will be the lesson you can learn from this Psalm number 13. Just then it is easy. So read Psalm number 13 verse 1 and Psalm number 13 verse 6. पहली वचन पढ़ना और लास्ट वाला वचन पढ़ना. How long, O Lord, will you forget me forever? How long will you hide your face from me? Read last. I will sing to the Lord because He has dealt bountifully. So it starts with prayer request, it starts with lament, it starts with doubt, but it ends with declaration and confidence. My Lord has done bountifully with me. हिंदी. हे परमेश्वर, तेरे नाम का भजन गाओ क्योंकि उसने मेरी भलाई की. It started with a prayer request, prayer supplication, but it ends with the answer of that prayer. Psalm 13 is traditionally ascribed to David, and as it is written in the heading, to the chief musician, a psalm of David. While the heading in the superscription, in other word, heading, सुपरस्क्रिप्शन करके लिखा है ना, समझने के लिए वहां हेडिंग. हेडिंग का हिंदी वो जो है वही है. While the superscriptions in the psalm are not always definitive historical markers, they often reflect ancient tradition regarding authorship and use. David's life, as recorded in the book of Samuel, was marked by periods in intense of personal distress, persecution, and exile. Many scholars associate Psalm 13 one of these periods, possibly during his flight from King Saul or Absalom. Again, it has connection with Psalm number 11 and 12. Why? There is no direct evidence, historical evidence, this particular day or this particular event, this psalm took place. So maybe during the time of Absalom, maybe during the time of Saul. So the context is David as a person, personally going through some kind of difficulties, and the kingdom as a nation, kingdom is going through some kind of difficulties. That's why it is written, how long, O Lord, will you forget me forever? Me लिखा है. So when you receive or when you see me, I, his, him, all these things, something personal. But read verse 2. How long must I take counsel in your soul and have sorrow in my heart all the day? How long shall my enemy be exalted over me? So everywhere you will see me. So the author very personally asking to God for help. The psalmist is asking God for help during the midst of this suffering. So when you say it is a personal psalm, when it affects David, it also affects the kingdom. ये जब दाऊद के जीवन में मुसीबत आएगा, दाऊद कौन था? So of course राजा का जीवन में कुछ मुसीबत परेशानी आया तो it will also affect the kingdom also. So it is mostly or very clearly it shows that it is a personal lament. At the same time, yesterday in the class I told sometimes when you take a king of the psalmist, and when the king is going through suffering, of course the nation also going through. The nation will be without a proper shepherding. कोई लीडर नहीं है अच्छा से आगे करने के लिए, कोई लीडर ही मुसीबत में है. So it also affect the kingdom. Then the historical context of the psalm reflect the ancient Near Eastern worldview, where divine favor and presence were closely tied to personal and national well-being. So one more details we can see. The history speaks that the divine relationship was very much important in the ancient world. Why? Because they, as a nation, they need God. As a king also, he is in need of
a support from God. So from now onwards, whenever you see a personal lament of Sam, साइड में मन के अंदर साइड में याद रखना, when it affects David, it is also affecting the kingdom. समझ आया? फॉर एग्जाम्पल आपका कलिसिया का पादरी को कुछ दिक्कत आया तो कलिसिया का भी होगा नहीं होगा? उदाहरण बताता हूँ, मेरा मम्मी पापा सब लोग इधर आया, बार बार घर पे जाकर कुछ करने के लिए जाना पड़ता था, अब मेरा इधर का काम क्या होता है? रुक जाएगा. इन द सेम वे, when king is getting affected because of his personal issues, personal problem, it is also affecting the kingdom. The role of lament in ancient Israel. Ancient Israel के इतिहास में विलाप का कितना इंपॉर्टेंस था? Lament was a central feature of Israel worship and spirituality. It provided a structure means of individual and community to express grief, protest injustice and seek restoration. So summarize करके बताता हूँ. In the history of Israel, lament या विलाप was an important element, especially during the time of worship and sacrifice. When they commit something wrong, what they used to do? Sacrifice. When they commit something wrong, they used to confess. So all this process, even when they go for worship, lament was there. They used to cry and ask forgiveness. So lament ancient Israel के जीवन में spiritually ये था. In the other way, they used to commit mistake, they used to do sin, they used to speak against God, then also used to try. समझ आया? खुद की गलती की वजह से भी रोते थे, खुद जानबूझकर गलती कर बंधुआई में ला जाने के समय फिर भी रोते थे. So lament was an important theme, or lament is an important theme in the history of Israel. So we have one book, Lamentations. वो lamentation का हिंदी क्या है? विलाप. So even prophets, those who went for prophecy, they looked into the nation and they used to cry. जो भविष्यवक्ता लोग जाति को देखकर रोते हुए परमेश्वर से प्रार्थना करते थे, ये लोग बिगड़ते जा रहा है, क्या होगा? हम सीखे थे ओल्ड टेस्टमेंट पढ़ने के समय. एंड एक प्रोफेट का नाम ही है, वही है जेरेमिया, मीनिंग वीपिंग प्रोफेट. And Psalm number 13 fits within this tradition as an individual lament. So it is also considered as a community lament, but it is also considered as an individual lament in the context of Psalm number 13. Why? Because in a grammatical construction it uses the word me. Me, कितने बार me आया? क्या गिनती करके देखो. Me and my. I भी है. Yeah, I भी है. So it is. Then Psalm number 13 को 6 वचन है. So 1 and 2, you can divide it into the complaint of Israel, the complaint of the people of God, or the complaint. In complaint they are asking to God, how long? So they understood this is from God and we are going through this because of something happened, something wrong happened. So they are asking, or he is asking, कितना दिन होगा? How long? I think how long came in verse number 1 verse 1a and 1b and 2a and 2b. है नहीं? How long? How long? How long? How long? 4 बार आया. Then 3 to 4, the petition. Read 3 and 4. Consider and answer me, O Lord my God. Light up my eyes, lest I sleep and sleep of death. Lest my enemies say, I have prevailed over him. So here, light up my eyes. So the psalmist is praying to God during the midst of suffering. Give me your wisdom to understand why this is happening. Otherwise, I will be like मरा जैसा, मैंने मर जाऊंगा, क्योंकि आत्मीय रूप से मर गया था, विश्वास से क्या हो जाएगा? That's why in Psalm number 12 he is asking, ये सफरिंग होने का समय, those who are in faith, they are also leaving the faith and going. That's why I told it has a connection. If you connect it when you are preaching, he is asking God for divine wisdom
God open my eyes so that I can see everything. Otherwise, what will happen? As others went away from you, from this faith, I will also. कनेक्शन है या नहीं? भजन संगीत 12 का हेडिंग क्या लिखा था? फेथफुल आर हाउ वानी. सो यस्टरडे मैंने कॉन्टेक्स्ट बताया था, मुसीबत आने की वजह से कुछ लोग विश्वास को छोड़ के. सो इधर भजन संगीत का सामने प्रार्थना कर रहा है, मेरा आंखों को खोलना परमेश्वर, ताकि मैंने सारी बातों को समझ सकूं. जब तक ये मुसीबत होगा मैं समझ के मुसीबत के बीच में से जीऊंगा, नहीं तो मैं भी मर. Maybe he is speaking about his physical body death, and maybe mostly he is speaking about his spiritual death. When we are spiritually died, what will happen? Backsliding. Verses 5 and 6. The expression of trust and praise. So, but verse 5 starts with but. लेकिन है ना हिंदी में. परंतु इतना हुआ, मैं प्रार्थना किया, परंतु डेविड नोस हु इज गॉड और हु गॉड इज, एंड ही टेस्टेड हिम, ही एक्सपीरियंस्ड हिम वेरी वेल. सो इवन दो ही इज pouring all his emotions, feeling, anger, irritation and everything, in the end how he is ending the prayer. परंतु मुझे तो पता है कौन सब कुछ देखता है. So go back to Psalm number 2 and think. David started a big prayer there, and he knows very well, even though all these things are going to happen, my God will look from heaven and he will watch everything. Then linguistic and poetical future. So parallelism, what is meaning by parallelism? हर दिन आ रही बात है, हर दिन बोलना मुझसे नहीं होगा. जोड़ जोड़ के लिखने का तरीका को क्या बोलते हैं? फॉर एग्जाम्पल, वेयर यू कैन फाइंड द पैरेललिज्म इन साउंड नंबर 13. 3 and 4. How long verse 4 start with small l, so that is parallelism, which means 3 and 4 we have to consider it as one. Then repetition. Which word is repeated in Psalm number 13? My, me, how long, how long. Then metaphor. Lighten my eyes. It is a metaphor saying in two different meaning. Maybe the physical eye and also spiritual eye. Theological themes. So it starts with a question because the God is silent. That's why he is asking, how long, O Lord, will you forget forever? मतलब there is no reply, there is no communication from God. So he is asking, कितना दिन होगा ये? So the first theme is the silence of God. Second, human suffering and faith. Even though he or they are going through a time of suffering, थोड़ा पोस्ट रखना. So he is asking to God a question because God is silent. So he asked a question in verses 1 and 2. Then 3 and 4 he is speaking about his enemy, how he is suffering. But coming to verse 5, he is saying, but parantu my faith is in God. So third one, there is a covenant relationship and divine steadfast love. Until and unless you have a strong relationship with God, even if you are raising questions to God, you will not end with confidence. फॉर एग्जाम्पल, हम माता पिता से कुछ बातें पूछता है, अगर हमको कॉन्फिडेंस है आज नहीं है तो कल खरीद के देगा. आफ्टर आस्किंग 2-3 times, व्हाट वी विल डू? व्हाट वी विल डू? आप लोग पूछते नहीं है कुछ भी. 2-3 बार पूछने के बाद आपको कॉन्फिडेंस है, पहला एक्सपीरियंस है. शायद पिता ने साइलेंट ही होगा क्योंकि पैसा नहीं है, ही विल बी कीपिंग साइलेंस. बट यू नो फ्रॉम योर प्रीवियस एक्सपीरियंस, when the money comes, he will buy those things and he will. So you will not ask again and again. You will just leave it to him because you have a declaration confidence. He have already understood the need
and he will buy when the money comes. The same kind of situation David have with God. So he asked to God and he left it because he knows that God will. Why? Because there is a covenant relationship between God and David. What is mean by covenant? In other word, promise. In other word, in a local language, agreement. So both of them have an agreement. Then the transformation of lament to praise. So you can, whenever you preach, you can take and say, even though you are going through suffering today, you are vilap ki samay hai, but it will turn to praise. Trust in the God. Be in that covenant relationship. Then Psalm number 13 भजन संगीतकार का कॉन्टेक्स्ट में देखा तो so Psalm number 13 occupies a significant place within the early portion of the Psalter book number 1. पहला भजन संगीता का पहला भाग में आता है. So in this पहला भाग में, in the first division of Psalms, that is chapter 1 to 41, you will see many laments of David, and it always it has the same style. Even though it starts with lament, it will end with praise. अभी तक हम दाऊद का कितना भजन संगीत देखा, स्टाइल तो सेम ही है. You can see the same kind of style. And today you came to know one more part. Why it is saying? Because he have a covenant relationship with God. Those who have that covenant relationship, even though they are not getting one-time meal, even though they are not getting chawal, they will not leave the God, but they will wait. So Psalm number 1 to 13. Whenever you preach, you can use this same quotation. Those who understood God, I think that is written in Psalm number 34, right? Taste and see that the Lord is good. Psalm number 34. चक्कर तो कोई से कुछ लिखा है. So दाऊदी लिखा होगा वो. So those who tasted him, not tested, tasted him, those who experienced him, even today I am going through suffering. ये सफरिंग है कर कर विश्वास की छोड़ के जाना मुझसे नहीं होगा भाई. देयर इज अ कॉवेनेंट रिलेशनशिप. पिता और बेटा के बीच में जो रिलेशनशिप होता है वही रिलेशन उससे बढ़कर एक रिश्ता है. आज खाना कपड़ा नहीं है तो भी छोड़ के जाना तो नहीं होगा, इंतजार बैठना तो होगा. The psalm brevity and clarity make it a pragmatic example of the lament form. It encapsulates the essential element of complaint, petition, and trust. So when you read this psalm, you can see three things are very common in other psalms also: complaint, petition, then trust. What is mean by complaint? What is mean by petition? Complaint. I am complaining that I am not able to adjust or I am not able to go through this kind of thing. So I am, for example, इधर फैन बंद करके हम बैठा है तो हम क्या करेगा? Complain करेगा. What is mean by petition? What is mean by petition? For in the context of this psalm, as a nation they can give a complaint. As an individual, I am giving a petition. Or as a nation, we are giving a petition. Or as an individual, I am giving a. For example, if this thing happening only in the life of David, this complaint and this petition is very personal. But पूरा nation में हुआ तो that is not personal, right? समझ आया? So whenever you see complaint and petition, I told if the matter is affecting the king, it is also affecting the kingdom, because king is going through suffering, so there is no one to take care of kingdom. So what are the three things you can see in this psalm also? C, P, T. Complaint, petition, trust. So whenever you go through the history of Israel, you can see this thing. पहला कहाँ अगर complain किया? In which place they complained for the first time?
हाँ? इजिप्ट से निकल के आते आते लाल समुद्र के वहां आकर क्या कंप्लेंट दिया, इधर मार डालने के लिए लेके आया. सो दैट वाज द फर्स्ट कंप्लेंट. सो कंप्लेंट इज, और हिंदी में बताना तो पेटिशन होता है. Complaint means sometimes without understanding we can even complain, but petition we know that he is going to help. So we know that there is a facility to help us, so we can give a petition because we know when once we give the petition they will help. For example, आपका घर का आपका जमीन आपका पड़ोसी वाला आकर कब्जा किया, so you are going with a petition. Why? You know that there is a rule, if this land is belongs to me in a paper, means certificate में ये जमीन मेरा है करके ये, तो when I give a petition you know that police will come and they will do the justice. But complaint is you don't know what is happening, so you can simply complain ये आया वो आया करके. But petition is in a proper way you can do. So in the second part you can see the petition. वर्स 4 दाऊद बताता है, नहीं तो मेरा एनिमी लोग मेरे बारे में मेरा ऊपर क्या होगा. मीन्स पेटिशन बोल रहा है परमेश्वर से, ये एनिमी लोग सताने की वजह से वो लोग ये सोच रहा है हमको बचाने वाला कोई नहीं है करके सोचकर हमको और सता रहा है. ऐसा आता है ना मीनिंग वर्स 4 का. मतलब उन्होंने बोल रहा है परमेश्वर बचाने के लिए आपसे होता है, बट हाउ लॉन्ग यू विल वेट. सो ही इज गिविंग ए पिटीशन इन द सेकंड पार्ट. इन द फर्स्ट पार्ट ही इज डायरेक्टली कंप्लेनिंग, कितना दिन होगा, क्या आप मुझे भूल गया क्या, यू फॉरगॉट मी गॉड. बट इन द सेकंड पार्ट ही इज गिविंग ए पिटीशन बिकॉज ही नो व्हेन यू अप्रोच इन दिस वे दे विल. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू गिव ए कंप्लेंट विद द डिटेल्स हाउ इट शुड बी रेक्टिफाइड. एक कंप्लेंट आप एक पिटीशन दे रहा है पुलिस को, बोलते ये नियम के अनुसार है, अनुच्छेदन के अनुसार ये होगा, पुलिस लोग भी क्या सोचेगा, इनको पता है इसलिए हम करना ही पड़ेगा. सेम काइंड ऑफ ए कॉन्टेक्स्ट कम्स इन साम नंबर 13 ऑल्सो. सो डेविड इज टेलिंग टू गॉड यू कैन सेव मी. अगर आप सेव नहीं किया तो इफ यू आर नॉट सेविंग मी व्हाट माय एनिमीज विल थिंक. And if my enemies will think like that, whose name is spoiled. वो लोग क्या सोचते हैं परमेश्वर, इन लोग हम और सताएंगे, बचाने वाला कोई नहीं है. इसलिए पहला पूछा आप हमको भूल गए क्या या मुझको भूल गए क्या. सो कंपैरेटिव एनालिसिस, इफ यू कंपेयर दिस साम विथ अदर साम्स, यू कैन कंपेयर दिस विथ साम नंबर 22, साम नंबर 42, साम नंबर 77. Then, yeah, we will see Psalm number 22. What is the content there? Same kind of tune है वहां भी. खोल के देखो, सेम ही है ना. पहला वचन 22 verse 1. My Lord, my God, why are you forsaken? Same है. So you can compare this psalm with these psalms. Psalm number 22, 42, 77. According to Jewish people, when they go through suffering and when they go through tensions as a nation, as a community, they used to remember this psalm. Point number 1. Then, in the medieval Jewish commentators, as Rashi and Ibn Ezra emphasize that this psalm's psychological depth, interpreting psalmist anguish as a reflection of human struggle. So some scholars, कुछ पंडित लोग बताए ये भजन संगीता भी एक इंसान का साइकोलॉजिकल मैटर को भी हमको दर्शाता है, क्योंकि सतावाने की वजह से उनके साथ खड़ा हुआ लोग भी विश्वास की छोड़कर चले जाने की वजह से बहुत दुख होकर परमेश्वर से एंग्विश होकर, नाराज होकर, विवश होकर पूछ रहा है ये कितना दिन और होगा. समझ आया. So this psalm is very deeply psychologically connected with our human nature. When we go through suffering, we will also ask God,
हाउ लॉन्ग दिस इज गोइंग टू हैपन, हमारा दोस्त भी विश्वास छोड़ के चला गया होगा, नेक्स्ट चांस किसका है? तब हम पूछेंगे परमेश्वर से ये कितना दिन होगा। विश्वास की बातें पकड़कर इस मुसीबत के बीच में बने रहना बहुत मुश्किल है। एटलीस्ट इफ आई नो हाउ लॉन्ग दिस विल हैपन आई कैन बी हैप्पी। अगर एक महीना सताव होगा हम क्या सोचेंगे? एक महीने तक बने रहेंगे पकड़ कर। वी विल ट्राई अवर लेवल बेस्ट टू बी इन फेथ फॉर 1 month, बिकॉज आफ्टर दैट सब कुछ ठीक, एवरीथिंग विल बी। दैट्स व्हाई द psalmist is asking. कॉन्टेक्स्ट क्या है समझ आया? मे बी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ शाउल और and it is connected to individual and it is connected to the nation. Christian interpretation बोलने की जरूरत नहीं है। when we go through suffering, when we go through persecution, as a nation, as a church, or as an individual, or as a community, as a Christian community, we can take this psalm and we can reflect. समझ आया? Psychological and spiritual dimension. Psalm number 13 offers profound insight to the psychology of faith under trial. परीक्षाओं के बीच में हमारा विश्वास के बारे में और विश्वास का समय, विश्वास को पकड़ के रखना कितना मुश्किल होगा, इस भजन संगीता 11, 12, 13 can teach us very clearly. Even though the people will go away, why? Because they might not have a covenant relationship with God, but the one who have covenant relationship with God, he may ask question in his anger, but he will end his prayer with confidence. समझ आया? पक्का आया नहीं आया? फॉर एग्जाम्पल सिर्फ चंगाई, हीलिंग, कुछ पैसा का सेटलमेंट हो गया, विश्वास से आते हैं बहुत लोग। कुछ दिनों के बाद पैसा कम होगा और 2 दिन बीमार होगा, चंगाई नहीं मिलेगा, कहाँ चले जाएगा? दे विल गो टू द अदर बाबा। भाई इधर नहीं मिला तो वहाँ कनेक्टिंग इट विथ आवर फैमिली। घर पे खाना नहीं मिला तो पड़ोसी के घर पे जाके खाना खाता है। खाता है? कौन है वो बंदा? खाते हैं आप लोग? आपका मम्मी पापा ने खाना नहीं दिया, घर की पड़ोसी के घर पे जाके खाना खाता है। अच्छा रिश्ता देगा, कितना दिन होगा? हम तो नहीं करता है, इसलिए मैंने सवाल भी पूछा। फॉर एग्जाम्पल मेरे घर पे खाना नहीं मिला, तुरंत पड़ोसी के घर पे जाकर आंटी खाना दे दो, मेरे घर पे खाना नहीं मिला करके हमको नहीं बोल सकता है। इन द सेम वे कुछ लोग होता है सिर्फ चंगाई के लिए कुछ चमत्कार देखकर विश्वास में आता है, कुछ दिनों के बाद कुछ नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल हमारा जो रिलेटिव है, मैंने विपिन नितेश लोग आया था, जोई पास्टर के चर्च में था, वो लोग जब मुसीबत में था सुसमाचार सुनकर दे केम टू फेथ। विश्वास में आने का समय ये सोच में आया कार मिलेगा, घर मिलेगा, वी विल बी वेरी रिच, सोच में आया। 2 years, 3 years, 5 years कुछ नहीं मिला। हर एक जरूरतों का परमेश्वर ने पूरा किया, कुछ नहीं मिला। रोमन कैथोलिक विश्वास में वापस चले गया। अभी कार मिला, 2-3 दिन में पहले कार लिया था, स्टार्टअप चला था, कार लिया, बड़ा पैसा वाला हो गया, ये सोना चांदी सब कुछ मिला। सो व्हेन जोई पास्टर व्हेन एंड आस्क्ड देम, दे सेड हमको वहां नहीं मिल रहा था, इधर मिल रहा है। सो दैट इज फेथ फॉर देम। बट दोज हु हैव ए कवेनेंट रिलेशनशिप, कुछ नहीं मिला तो भी, क्योंकि ये बात तो पता है जरूरतों को परमेश्वर पूरा Modern psychological interpretation have highlighted the therapeutic function of lament. ये सारांश बताता हूँ। जो लोग साइकोलॉजी का फील्ड में होता है, they use those who are in Christian counseling field or psychological field. ये साइकोलॉजी का जरूरत नहीं है। आज तू रोएगा कल तू हंसेगा करके हम बोलते हैं ना। यानी प्रचार आज का रोना और आज का दुख कल का गवाही बन जाएगा। So from this kind of psalm we can get this kind of statements with experience of someone already David is there, and we can give counsel others by saying ठीक है आज दुख है तो भी डोंट वरी, कल क्या होगा,
सब ठीक होगा, क्योंकि मैं एक भजन संगीत दिखाता हूँ करके बोलने के लिए. So we can point out these psalms and we can counsel others when they go through difficult times in their faith life, in their Christian life, by saying this is not a new experience, it already happened in the past, and see how the way he prayed, you also pray in this way, God will surely help you. Contemporary relevance, when you and I go through uncertainty, suffering, struggling, hardship, painful situation, and we don't know what is going to happening. Maybe our friends left the faith, or maybe our family members went in search of other faith, and we are going through such kind of situation. Then you can also remember this psalm, and you can also preach this psalm to the community and encourage them. Even if everyone will fall away, if you have that covenant relationship, you will not. भजन संगीत 91 में लिखा है ना, 1013 1000 will fall. किसी ने पढ़ी है? किसी ने पढ़ी है? So the conclusion is, ऊपर दिए हुए बातों का सबको जोड़कर conclusion है, there is a hope in this psalm, there is a matter of trust, divine intervention, prayer, petition, complaint. पढ़िए. तेरे निकट 10,000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरे, परंतु वह तेरे पास न आएंगे. 1,000 में बस. So any doubt from psalm number 13? Any doubt from psalm number 13?